मला बाहेर राम्रो जानु। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम जा रहे हैं आज भिलाई। सबसे पहले हम जाएंगे चेकअप करवाने, जो कि सेक्टर 9 है। तो उसके बाद जाएंगे हम फिर रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं।
And I ran away out of all this gray. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I feel love from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. I feel love from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. And I ran away out of all this gray. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I feel love from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. I feel love from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. तो दोस्तों हम जो है फाइनली सेक्टर 9 पहुंच चुके हैं। तो चलिए थोड़ा चेकअप वगैरह कराते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं हम स्टेशन की तरफ। तो अभी के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आज जो है मैं हॉस्पिटल क्यों आया। तो एक्चुअली क्या है, मेरे दांत में जो है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी वजह से जो है मेरे को दल्लीराजहरा से जो है यहाँ पे सेक्टर 9 में जो है रिफ़र कर दिया। तो मैं जो है अभी डेंटल के पास आया हूँ, डेंटल ओपीडी में आया हूँ डेंटिस्ट के पास। तो अभी तक तो फ़िलहाल डॉक्टर आया नहीं है, देखते हैं कब तक आता है। उसके बाद फिर जो हमको दीदी को छोड़ने भी जाना है, जो कि स्टेशन में जाना है, रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पे कितना टाइम लगता है देखते हैं, यहाँ पे कितना टाइम लगता है हमको यहाँ से निकलने में, तो देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के बाहर। तो डॉक्टर से बात वगैरह हो गई, चेकअप वगैरह हो गया। तो अब क्या हुआ एक्चुअली में, थोड़ा सा हमको डॉक्टर जो है लेट आया, तो उसकी वजह से जो है दीदी को जो चाची जो है दीदी को लेकर चले गई स्टेशन। तो अभी फिर से गाड़ी आ रही है, तो फिर हम उस पर जो है स्टेशन चलते हैं। हो सके तो मतलब दीदी मिल जाए तो बाय बाय बोल देंगे उनको। तो चलिए फिर देखते हैं स्टेशन पहुंच पाते हैं कि नहीं। लाला
कसैले केही दिएको खाने होइन है रितु नखाने अनि झ्यालदेखि बाहिर नि हात निकाल्ने होइन है ल भाइ राम्रोसँग जानु दोस्तों फाइनली हो चुका है हमारा शॉपिंग ख़त्म और अब हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट। गाड़ी आएगा उसके बाद फिर हम चलेंगे घर की तरफ। तो देखिए हमने क्या क्या शॉपिंग किया, मैं आपको जो है पीछे दिखा देता हूँ। लेट्स सी।